All right, जनता, very good evening to my lovely set of students. मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों का बैच मिशन MBBS 2024 सीरीज की ये क्लास है। और जब मैं यहाँ नहीं थी बट थी आप लोगों के साथ, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के आपने 2 लेक्चर देखे होंगे। या द टॉपिक आई स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड दिस chapter is very special to me. You know why? Because as much as I love this subject, botany, anatomy of angiosperms is the real, वो रूहानियत है, वो सोल है बॉटनी का। सही बात है कि भाई मैंने प्लांट टिश्यू को, मैंने प्लांट के ऑर्गन को, रूट को खोलकर, मैंने प्लांट की स्टेम को खोलकर एक्चुअली अंदर ये देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि भैया मामला है क्या, ये बना किस चीज से है। तो डेफिनेटली मैंने बॉटनी को जब इतनी बारीकी से समझा तो प्यार कैसे ना हो। इसलिए आपने अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सिंपल परमानेंट टिश्यू, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हाउ डीपली आई फील अबाउट दिस चैप्टर। मैंने आपको एक सजेशन दिया था और एक तरह से आपको ये sort of ये एक रिक्वेस्ट भी की थी और एक sort of वार्निंग इज टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन एक डिस्क्लेमर बोल देते हैं। आपको एक डिस्क्लेमर दिया था कि एनाटॉमी एक हाईली टेक्निकल चैप्टर है। इट इज अबाउट कैलकुलेशंस, इट इज अबाउट ऑर्डर, है ना। तो लाइफ में बच्चों, अगर आप एम कर रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे किसी की जिंदगी बचानी है, आई एम गोइंग टू बी नेक्स्ट टू गॉड, या द गॉड ऑन प्लैनेट इन लाइफ फॉर्म, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं है। तो बेटा डिसिप्लिन अगर लाइफ में नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, ये समझ नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, देन यू नो यू विल बिकम अ पर्सन हु इज just not happy. So happiness is not a commodity. If you take the right steps, if you draw boundaries and you know who you are, what you don't want in life, what you want in life, ये सब तो बदलता रहता है। आज दाल मखनी चाहिए, कल बटर पनीर चाहिए। आज I feel like eating palak paneer today. I just spoke to my mom and I said, you know, I'm coming back after the plethora of classes that we've taken today, and then I'll help you make palak paneer. Yeah? So, super hungry by the way. तो बच्चों, what you don't want in life, what is जो तुम्हारी power of discrimination है कि यार अगर मैं क्लास मिस करूंगी about the complex permanent tissue, I am never going to get tissue systems. And if I don't know what is ground tissue system, what is epidermal tissue system, even if I don't feel like, we give a lot of importance to our feelings and emotions which are changing all the time. That is not you. The same you experiences a happiness while taking a class of physics, and the next day same you feels bored or doesn't want to take that class. Whatever is so impermanent is not you. The truth is permanent. So please push yourself towards what is right for you, but what is not charming in the present moment, for a better, happy tomorrow. It's as simple as that. Nobody said it's going to be an easy preparation. Cool with me? मजाक बहुत हो रहा है और मैं मारूंगी जोर से। जितने ज्यादा शरारतें हो रही है ना जूही क्लास में और शिवा, बेटा उतनी जोर से मैं मारूंगी, बिकॉज जो मुझे नहीं अच्छा लगता वो काम मैं करती हूं, सो दैट आई डोंट हैव रिग्रेट्स टुमारो। पढ़ाई में ध्यान दो। सो आई होप एंड आई विश दैट यू अटेंडेड दोज क्लासेस एंड यू आर नॉट टेकिंग दिस लाइटली, बिकॉज एनीथिंग दैट इज प्रोफाउंड इन लाइफ कसरत करवाता है, चप्पल घिसनी पड़ती ही है। Nobody in the world who's successful, who's happy, genuinely happy, not momentarily happy, will tell you that it came easy. Okay people, so I hope you have registered for ANTHE. इसी नोट पर share this class with everybody.
keep writing in the class. It's going to get more and more technical. Anatomy is a very, very technical botany. Okay? The link is given in the description box. November is right here. दिवाली के बाद, दिवाली पर आप enjoy कर लें. 24 अक्टूबर को दिवाली है. मुझे आज ही पता लगा, मुझे तो पता ही नहीं था. मुझे लगा नवंबर में. So, आपका 5, 13, 6 और 13 नवंबर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंथे में जरूर बैठिएगा. ड्रॉपर्स बैच इज रनिंग. मिशन MBBS बैचेस आर रनिंग. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 2 PM to 4 PM ड्रॉपर्स बैच होता है मंडे टू फ्राइडे. और मिशन MBBS सीरीज का स्केड्यूल आपको पता ही है. अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं कि कब क्लास है, मैम कब आती हैं, जैसे आज मैं 1 बजे भी आ गई, 3 बजे भी आ गई, 5 बजे भी आ गई, कभी भी टपक पड़ती है मैम, है ना. शनिवार, सोमवार, एतवार कभी भी आ जाती हैं. सो बेटर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए या फिर आप चैप्टर की चैनल की नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, सो दैट द device that you're hooked on to tells you that, you know, poor ma'am is coming to spread knowledge, might as well listen to her. कुछ जिंदगी में अच्छा ही होगा. इस चैनल, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है नीले रंग का. उस पर क्लिक करने से स्टूडेंट सर्वे फॉर्म खुलेगा. उसमें आप अपनी दिल की बात, जो भी आप मैसेज मुझे देना चाहते हैं, लॉट्स ऑफ लव, एनीथिंग यू वांट अस टू इम्प्रूव ऑन, any message you want to give to your teachers, please write in that form. It's a feedback form. We want to know how you feel. आपके दिल और दिमाग की स्थिति जानने के लिए this student survey form with the link in the description box is given. इस सेशन को लाइक तो जरूर कर दो यार. इतना हाथ से इतना प्यार अगर बांट रहे हो तो भैया प्लीज यार लाइक कर दो. तुम्हारे लाइक करने से क्या होता है, क्या होता है? मुझे पालक पनीर नहीं बनानी पड़ेगी घर जाके. नो, तुम्हारे लाइक करने से देर आर अदर पीपल इन द कंट्री हु आर डेस्परेटली क्रेविंग, प्रेइंग एंड विशिंग कि कोई हमें मैम जैसा टीचर पढ़ा दे, कोई प्यार से हमें सब्जेक्ट को समझा दे, सिर्फ सिलेबस ना कंप्लीट करवाए. ऐसे बहुत बच्चे बैठे हैं. जब आप एक सेशन को लाइक करते हो तो उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि कहीं पे बेचारी एक पंखुरी मैम बिना खाए पिए बैठी हैं, खड़ी हैं और पढ़ा रही हैं पूरी जान लगाकर बॉटनी. तो यार अगर ऐसा करोगे तो भैया हर लाइक और हर शेयर के लिए तुम्हारे 4 नंबर, एक वो MCQ जो शायद तुम नेगेटिव मार्किंग में लूज कर सकते थे या शायद तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, इट विल बी गिवन बैक टू यू बाय द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन, मेमोरी. You will see it. If you don't believe me, try doing this. किसी का अच्छा करोगे, it will come back to you many folds. Okay? Himanshu, beta spread this. Share this session. Thank you for your appreciation, बच्चे. And it takes a good student to find a good teacher. So you have to be a good student to identify, especially in this day and age of so many choices. There are so many people who are teaching. There are so many forms how people are being educated. पवन, see, तुम लोग ना सेंटी मत किया करो मुझे. मतलब ऐसे डायलॉग्स मारते हो. I become all fluid. Okay, now subscribe to. ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अगर इस क्लास में आया है तो. तनु सिंह, तनु मेरे बच्चे, माय डियरेस्ट, ये जो सेशन है ना, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें ही दिया हुआ है नीले रंग का. बच्चे ये 2024 वालों के लिए है. सही, बिल्कुल आपने सही बोला. जूही नहीं यार. If I have tea now, I won't sleep at night. If I won't sleep at night, how will I run tomorrow? I'm in the classes. Deeply fallen. Beta, first of all, I would love to see your real name. I'm sure your parents have thought a lot to give you your real name. Apron lover, beta share कर दो. Thank you so much for your appreciation. आपके प्यार से ही जिंदा हैं हम. योगीशा भाई, आज मेरे पे इतना प्यार क्यों बरस रहा है? Very good. Thank you so much. Jaspreet Kaur, thank you so much, darlings. God bless you. भाई आज है विजयदशमी. हैप्पी दशहरा.
Shiva, I have to introduce myself. I'm human. Okay, and right now on this planet Earth, इतनी introduction बहुत है, अब बस पढ़ते जाओ. Okay, so much of love trying to distract me. This जनता is trying to distract me. इन बच्चों की बात में नहीं आना है पंखुरी. Start studying, please. Start teaching, please. Teaching is a tough job. Okay, as much as I love it, some of you should aspire to be teachers. It's a very giving kind of profession. अच्छा, अब पिछली क्लास में अपन ने सिंपल यानी कि होमोजेनस टिश्यूज के बारे में बात की. भाई ये वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है जिसमें सारी चॉकलेट्स एक जैसी हैं. जूही तो खरीदती भी नहीं है. शी इज लाइक अरे यार मैं बोर हो जाऊंगी, सारी की सारी मिल्क चॉकलेट है, नहीं चाहिए मेरे को, सारी की सारी फ्रूट नट है, नहीं चाहिए मेरे को. और फिर एक ऐसा बॉक्स ऑफ चॉकलेट है जिसमें वी हैव डिफरेंट फ्लेवर्स. इवन आई लाइक दैट. You know, my favorite is white chocolate. Not many people like it. मेरे को बाकी chocolate जमती नहीं है यार. I can eat only white chocolate. I don't know why. So that is complex permanent tissue wherein you have heterogeneous composition of cells. All the cells are not going to be similar in structure. But the beautiful part of this story is that they are going to come together. The differences are going to come together and perform the same function. This is actually an ideal definition of tissue. The ideal definition of tissue more often than not is the group of cells which have the similar origin but similar or dissimilar in structure, and they come together, they assemble together to perform a similar function. With me on this? So let's explore complex permanent tissues today. And thankfully, botany is so easy and beautiful. It's a very, very easy subject, especially if you study ऐसे ही मजे मजे में गाना गाते गाते गाते. शिवाजी बेटा यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ ना वहां पर, मजे करो, ऐश करो. यहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब फिर तुम हो कौन? वहां पे भी यहाँ पे भी. You are nobody then. You don't have a self identity. हाँ, चलो. तो हुआ क्या कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दो मेन टिश्यूज आते हैं, व्हाइट चॉकलेट और जूही तेरे को दूसरी कौन सी पसंद है? मिल्क ले लेते हैं यार, विदाउट शुगर फ्री वाली. प्लीज यार, आई डोंट ईट शुगर मच. सो जाइलम एंड फ्लोएम, दो तरह की चॉकलेट्स हैं यहाँ पर. बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल से वो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचाने के लिए जाइलम आ गया, और जो लीव्स ने फूड बनाया, शुगर्स बनाई, उसको बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम भाई साहब आए. अब भैया हम हो गए थोड़े बड़े, लेट्स एक्ट लाइक. अब कुछ लोग तो हैं जो मेडिकल एस्पिरेंट्स कभी होंगे ही नहीं, है ना, जो स्पैम करते हैं, जो सब फालतू काम. लेकिन जो मेरे प्यारे सीरियस बच्चे हैं, है ना, जो मेहनती लोग हैं, आज से हम ये नहीं बोलेंगे कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. वी आर गोइंग टू बी अ लिटिल फैशनेबल अबाउट इट. वी आर गोइंग टू से दैट जाइलम कंडक्ट्स द सैप. व्हाट इज सैप? सैप इज वो कॉन्कॉक्शन, वो घोट के जैसे मम्मी काढ़ा, मम्मी नहीं यार, मैं ही सबको पिलाती हूँ काढ़ा मेरे घर में. तो काढ़ा पिलाती है ना, सब मसाले घोट कर पीस कर, दैट काइंड ऑफ रिच कॉन्कॉक्शन of water in the soil and the minerals in the soil, that is xylem. भाई इसके बिना ना कुछ नहीं हो रहा प्लांट में, झड़ जाएगा, मर जाएगा. ओके, एंड फ्लोएम को आज हम थोड़ा सा let's act like glamorous medical aspirants. Yeah, we are a part of Aakash BYJU'S NEET and not the platforms that people are naming. So, organic solutes. And the good part is, I have been everywhere. So that says what is better and what is not. Anyway, so phloem क्या करता है? Organic solute का क्या मतलब है भाई? Carbon containing compounds, carbohydrates.
proteins, fats. So this is a broader, rich term. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. पहली बात, इट इज अ heterogeneous. हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. Different cells work as a unit. I told you, they come together with different structures but performing the function of conduction of sap. If I talk about xylem. Yeah? Now, अब हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, इसमें डिफरेंट चॉकलेट्स कैसी हैं, राइट? अब एक बात बड़ी पक्की है कि द अरेंजमेंट ऑफ दीज सेल्स इन द xylem is going to be like a pipeline. रूट के पास बहुत सारा पानी है, उसने एब्जॉर्ब किया. अब एक कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर मुझे बनानी है, एक पाइपलाइन बनानी है कि इस रूट से पानी बिना रुकावट के स्टेम, लीफ या एरियल पार्ट्स में पहुंच जाए बिना रुकावट के. कहने का मतलब, a very important keyword, that the direction of flow is single direction, downwards to upwards or unidirectional. But if we talk about phloem na baba, then it is bidirectional. क्यों? क्योंकि लीफ से जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, जो शुगर्स हैं, they are going downwards to the roots and upwards to the stem. So, the important keyword for direction of or the flow of substances in phloem is bidirectional or the two-way flow. With me on this? अब हम xylem की anatomy पे आ जाते हैं. ये हमने उसकी फितरत के बारे में बात कर ली. Is that clear? Now, before we go into the all this lot of concepts, बहुत ज़्यादा जो bookish knowledge है उस पे जाएंगे. There's one line that I'm going to give it to you. All ready for that? जूही, तू ना ये क्लास सिर्फ 127 times कर चुकी है. You've done my marathons, you've done my one shots, you've done my Mission MBBS series, you've done droppers batch. तुमको तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए अब तक. हाँ, तुम्हारी तीसरी आंख खुल जानी चाहिए. So the famous line about xylem which is going to help you always. Xylem is mostly a dead tissue. Let's derive another concept from this very line. Man, I love deriving concepts from concepts. Hence, this line is written in textbooks, फालतू में, फेंकी हुई है. But we are giving a logic to that. Because this right here is a logical piece of organ. It needs logics. Might as well give it. Satisfy the brain. If it is a dead tissue, I've taught you in the last class, wherever deadness, let me take the liberty of saying this word, wherever deadness or sclerenchyma tissue will come, I will have utmost. By the way, the term sclerosis itself is something becoming rigid and jakra hua, right? So, it will give a lot of mechanical strength. Mechanical strength is of two types taught to you. It's flexibility. Something that is flexible is also strong. And something that is rigid is definitely strong. But this kind of strength, owing to the deadness, is rigidity. So people of the planet, I am so happy to tell you, whatever is super strong in the plant body, like our bones, is actually the xylem tissue. So xylem is what is making the wood of a tree. It's a special tissue. So although conduction is the primary function,
but owing to the anatomy of xylem, the composition of the xylem, it's also doing this. Okay? There you go. Another function that should not be ignored is mechanical support. It is composed of living and non-living cells. But I gave you a clue. It is mostly non-living tissue. जो xylem प्लांट के बचपन में बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी xylem. वो वाले सेल छोटे से, नन्हे से, क्यूट से, पतले से बनेंगे. मैंने एक टर्म तुम्हें एनाटॉमी की बेसिक्स से अवगत करवाया. आई इन्फॉर्म्ड यू कि भैया स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में क्योंकि ये डेड सेल है, अंदर तो कुछ नहीं है, खाली बक्सा है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं ल्यूमेन. अब ये खाली स्पेस से कुछ होगा. अगर भगवान प्रकृति कुछ करती है, वो देखने में जीरो लगेगा, खाली लगेगा, बट देयर इज ऑलवेज अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट. आया बात समझ में? तो ये मैंने आपको कहानी इसलिए बताई है क्योंकि जो प्राइमरी xylem है, जो जब प्लांट जवान बच्चा होता है, तो उसमें ये जो ल्यूमेन है, ये जो स्पेस है, वो थोड़ा कम होता है. बट एज द प्लांट ग्रोज, उसको बुद्धि आती है, तो जब जो xylem बनता है वो सेकेंडरी xylem होता है. उसमें बनने वाले सेल्स या कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, वो सेल्स या कॉम्पोनेंट्स किसको पता? ना मुझे पता, ना तुम्हें पता है ना. तो पता करने की कोशिश ना करें, सिर्फ ये बात सुने कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्म्स का क्या मतलब है. बॉटनी और ज़ूलॉजी तब मुश्किल हो जाते हैं, बायो तब मुश्किल हो जाता है जब हम टर्म्स को रटने की कोशिश करते हैं और बहुत इजीली शॉर्टकट मेथड से रटने की कोशिश करते हैं. एज अ टीचर मैं पिछले 10-11 साल से बच्चों को या दूसरे पढ़ाने वालों को भी यही बोल रही हूँ कि जब तक हम सब्जेक्ट को इमोशनली नहीं समझेंगे, भाई एक जो कहानी, या आप मूवी थिएटर में जाते हो, 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देखते हो, हाँ, उसके बाद जूही 10 लोगों को वो स्टोरी एज इट इज बता देती है. 1 साल बाद श्रद्धा से पूछो भाई इस मूवी की स्टोरी बता दो, अरे भाई विलन की एंट्री कब हुई, हीरो ने कब मारा, हीरोइन कब हंसी, कब शर्माई, सब पता होता है तुम लोगों को. क्यों? बिकॉज यू कनेक्ट इमोशनली विद द स्टोरी, विद द स्क्रिप्ट. So when you start doing that in physics also, if you find physics difficult, if you find chemistry difficult, तो तुम्हारे दुखों का यही इलाज है, make it your own. अपनापन लाओगे तो सब हो जाएगा. ओके? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब समझ में आ गया, पहले बनने वाला, बाद में बनने वाला. जो और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया था. द ग्रोथ दैट हैपेंस लेटर, यानी कि सेकेंडरी xylem बनेगा डाइकॉट्स में. आई बात समझ में? आगे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स. प्राइमरी xylem इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ और द इनिशियल ग्रोथ. मैंने तुम्हें बहुत ही मजेदार, लाइक पर्ल्स, मोतियों जैसी ये टर्म्स जो यूजुअली बुक्स क्लियर नहीं करती हैं, आई क्लियर्ड इट टू यू कि कोई भी प्राइमरी टिश्यू आ कहां से रहा है, हु इज द मदर, इट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. And I told you that this phenomenon, this process, which is quite characteristic in plants, that permanent tissues come from a rapidly dividing meristematic tissue, is called differentiation. Rings a bell? Rings a bell? Yeah? Very good. चलो, उसके बाद इसको हम छोड़ सकते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी xylem को थोड़ा सा और खोदते हैं. ठीक है? अब प्राइमरी xylem में क्या हुआ, जो सबसे पहले अभी जो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था ऑफ प्रोकैम्बियम, वो मैं अब समझाऊंगी. देयर इज अ सीक्वेंस इन विच यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद एक ऐसा इनिशियल टिश्यू बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैम्बियम. वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होता है. और उस प्रोकैम्बियम से जब xylem बनता है, तो प्राइमरी xylem में भी सबसे पहले आने वाला xylem होता है प्रोटोक्साइलम, और उसके बाद वाला होता है मेटाक्साइलम.
ऐसा हमने प्राइमरी जाइलम में देखा है, सेकेंडरी जाइलम में हमने नहीं देखा है ऐसा। ओके, अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स मार्क देम एज P एंड M, राइट। अब अगर P सेंटर की तरफ है, P सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, नहीं समझ में आया ना? मान लो ये रूट है, सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, कोनिकल ऑर्गन है, रूट है। अब तुमने इसको इस तरह से काटना शुरू किया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। प्याज को कैसे काटते हो? कभी मम्मी बोलती है लंबा लंबा काटना, कभी बोलती है इस तरह से स्लाइसेस काटना व्हेन यू आर कटिंग फॉर द सैलेड। सो अंडरस्टैंड, अगर चैटिंग करने से थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, 2 मिनट, तो ये सुन लो, वरना ये सिर्फ अक्षर रह जाएंगे एंड यू विल नेवर गेट इट। Root is a cone. Root is a cone, and I start cutting it like this. Khachak, 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 khachak. Or rather, let's make it better. I start digging it up. When I start digging it up, I'm going to reach the core or the deepest portion of this organ. Now that is the center. With me? When protoxylem is towards the center and the newly formed is formed outside, that is metaxylem, ऐसे प्राइमरी जाइलम को एंडार्क जाइलम बोलते हैं। एंडार्क जाइलम बोलते हैं। मैम जिंदगी मुश्किल हो गई यार, हुई मुश्किल। Lots of love from Bangalore, Paradise, Kashmir. People of the planet, I'm going to give you a trick right now. मैंने जब से मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, I've been teaching you कि एंडो का मतलब होता है जहां पे भी प्रीफिक्स आ जाए एंडो, उसका मतलब होता है इनर साइड। इसीलिए रेगुलर क्लासेस लेनी जरूरी है। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं which make life and everything better for you. Okay? So, आप हमेशा P को ध्यान रखोगे। आप हमेशा P का ध्यान रखोगे। P is on the inner side. So, एंडार्क जाइलम। इसी में से अगर एम्स का क्वेश्चन बनाना है तो आई कैन से दैट एंडार्क जाइलम डेवलप्स। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडार्क जाइलम? इट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि नया जाइलम सेंटर ऑफ द ऑर्गन की तरफ नहीं है। खचैक खचैक खचैक, dig it out, dig it out. It's not in the center. It's somewhere on the outline. This kind of primary xylem, Endarch xylem, you will get it. Don't worry, you will get it. Like I said, anatomy is technical. It might take time in the first go, but once you understand, you're not forgetting it. It's not like plant kingdom. It's not like animal kingdom. The volatility of this chapter is very less. Good news. But initially, you might have to work hard. Yeah, it's like making an art form. With me on this? So let it flow. So this kind of xylem is present in stems. Which kind of xylem, people? Endarch xylem. What happens in Endarch xylem? I don't care about the M. I care about the P. Okay, so P is in the center. M is towards the periphery. Let's make another question out of it.
So what kind of development is happening in stems? Ooh. Or to make it more glamorous, what is the, in what direction wood develops in stems? As far as young age is concerned, we are talking about primary xylem and not secondary xylem. It is centrifugal. Okay, there we go. Now what you see here is different from what I just taught you. Is it too different? No, it is just the opposite of what we just studied. So when there are two complementary concepts, physics, chemistry, botany, zoology, always learn one. जिंदगी को आसान करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Don't wait for somebody else to drop in and make it easy for you. It's never going to happen. So the opposite, let's not look and read anything. Do it in your head. What is the opposite of this? The opposite, let's do it together, is M in the center and P outside. Now the new xylem likes to be in the center of the organ and P likes to be on the periphery. But ma'am told us to focus on P. Let's focus on P. So now doing everything opposite, the development of xylem is centripetal. What is the opposite of centrifugal? Centripetal, towards the center. We have to give a name to that. Yeah, if endo is in, then exo is out. So this is your exarch xylem. कई बुद्धियां तो रो पड़ी हैं. ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है. Don't think that I imagine a very rosy world कि भैया मैंने पढ़ा दिया और मेरे बच्चों के तो उसी वक्त एंटीना इज आउट. बहुत सारी जनता के एंटीना कहीं साइड में पड़े हैं. सो एनाटॉमी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यू माइट, इट्स लाइक फिजिक्स ऑफ बॉटनी. इफ यू आर नॉट अटेंटिव, if your mind has a lot of noise, forget about the outer noise. If your mind is like, कब क्लास खत्म होगी, मुझे पिज्जा खाना है, कब क्लास खत्म होगी, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करनी है, कब क्लास खत्म होगी, I have to see whether that guy liked my picture on Facebook. Oh, Pankhuri Maam, why is she teaching here? What is happening? Ma'am, wo kya? If you're sitting with that space, anatomy is going to be tough. अच्छा, जो लोग जेन्युइनली यहाँ पे ध्यान लगा के बैठे हैं और तुम्हें भी मुश्किल लग सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट कि भैया मेरे मुंह से तो कॉन्सेप्ट निकला और वहां चमका और सब अच्छा है. नो, व्हाट इज डिफिकल्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड सो दैट वी कैन वर्क इन दैट डायरेक्शन. नाउ पीपल, as is the promise, I'm going to be the broken record, I'm going to be the cassette, and I'm going to run and repeat these concepts in every class because I understand the pain of a student. But that doesn't mean that you don't learn it the first time. The problem, the catch of this story is, every time I repeat it, and try this out, every time I repeat the same concept, you're going to hear it differently. And that happens. Okay? जैसे मम्मी इतने सालों से गालियां दे रही हैं, हर बार अलग ही चमकता है यार, हर बार उसका भाव ही अलग होता है. So that way. Yeah. I'm so happy. You should accept कि मैम टॉपिक वी आर ट्राइंग थोड़ा समझ में आया, काइंड ऑफ समझ में आया. ओके, चलो, नाउ लेट्स गो फर्दर. Let's repeat it. We have a beautiful image. What just happened? P is outside, eyes on the screen, not on me. P is outside, M is in the center. I don't know what just happened.
So instead of mugging up the theory, समझो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं. 20 जगह 20 डिफरेंट टीचर्स से क्लास अटेंड कर लोगे, नहीं समझ में आएगा. टिल यू डोंट मेक एन एफर्ट टू च्यू द कॉन्सेप्ट ऑन योर ओन. भाई तुम्हारा खाना तुम्हें ही चबाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा पेट भरेगा. कम ऑन, वेक अप. So now I'm going to make it easy for you. Please don't mug up the theory in biology. Whoever says, especially JEE maths वाले लोग, कि भैया बायो में रटना पड़ता है, मैथ्स में नहीं रटना पड़ता है, that is a wrong thing. बायो में कुछ रटना नहीं पड़ता है, मैथ्स में खासी इमोशंस नहीं होती. बायो is it's a subject to be felt. Okay? So, peas outside. Oops! I'm not going any further. I don't care about the M. Peas outside. Immediately it should do a sparking in my head that if peas outside, I am talking about Exarch xylem. Is the purple visible? पेन की जिंदगी में मेरा तो संकट आ जाता है. Exarch xylem. And once this is done in your head, तो कोई सवाल है ही नहीं जो तुम नहीं कर पाओगे. आया या नहीं आया? Once again, I'm repeating it, but you're going to hear it differently. ऐसा ही होता है, जेई वाले आ ही जाते हैं बायो में. बायोलॉजी कैसे कोई नहीं पढ़ सकता ना. So protoxylem is the first formed xylem. Metaxylem is formed after protoxylem. But here, don't forget, we are talking about primary xylem or the first degree xylem. Produced by procambium, produced by fascicular cambium. You can leave these points. I'm not going to get into this. Not required. That's a long story. We're not talking about that. Matures before plant tissues have finished elongation. Not required. Okay? अब एंडार्क कंडीशन कहां पे होती है? स्टेम में होती है. याद किया, घर गए वापस, सोए उठे, चिल मारने का. अपने आप अंडरस्टूड है. एक चीज याद रखनी है कि अगर स्टेम में एंडार्क है तो रूट में एक्सार्क होगा. देखो, मेरे को बिल्कुल भी चैट सेक्शन रुका हुआ नहीं मिलना चाहिए. लगातार टाइप करो मैसेजेस. यहां पे जो चल रहा है, मैं जो बोल रही हूं वो मिस हो जाए कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं है. रिपीट कर लेंगे अपन, क्या फर्क पैदा है. मेरे को वहां पे इमोटिकॉन्स, मैसेजेस, दे शुड रन. इट शुड बी लाइक तुम्हारा पूरा ध्यान चैट सेक्शन में होना चाहिए. मैम का क्या है, रोज आती है, हर 1 घंटे बाद आ जाती है, बोल के चली जाती. चलता रहेगा यार. रूट्स में कौन सी कंडीशन है? एग्जैक्ट कंडीशन है. नो नीड टू मग अप. लेट्स डू उल्टा ऑफ एंडार्क. प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम सेंटर. यहां पे पूरे का पूरा ऑर्गन दिखा दिया. मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी. दैट इज नॉट हाउ आई टीच. अब जाइलम के कंपोनेंट्स देखते हैं. बिल्कुल लगे रहो भाई, लगे रहो, लगे ही रहो. Xylem is made up of 4 kinds of cells. There are 4 components of xylem. Okay? They are called tracheids, vessels, parenchyma, fibres. Ma'am said something that most of the xylem is non-living or most of the xylem is dead. But there is a rule. Ma'am told us that parenchyma can never be dead. Parenchyma is the first living tissue, living permanent tissue that evolves from meristematic tissue. So, let's mark it as living. Rest 3 components are dead components. And the only dead tissue in the plant is sclerenchyma. Hence proved.
ना ना, रुकना ही नहीं है भाई। मैं कह रही हूं, मतलब बताओ मुझे क्या टाइपिंग स्पीड है तुम्हारी। भर दो चैट बॉक्स, की फर्क पैंदा है यार। मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तुम विश्वास नहीं करोगे, द ड्रीम आई हैड लास्ट नाइट वॉज कि मैं फाइनल ईयर एग्जाम में फेल हो गई। फर्स्ट ईयर में ना द सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ चेंज, एंड आई थॉट आई कुड नेवर डू दिस। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल, एंड one thing my mother told me every night before sleeping, की फर्क पैंदा है। And I'm telling you, विरासत में मिला हुआ ये दौलत बहुत काम आता है। अब इसको यूज करना आना चाहिए, इसीलिए पता होना चाहिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ इट की फर्क पैंदा है। सो अगर कोई पूछेगा ट्रेकीड्स डेड, वेसल्स डेड, parenchyma no. A promise that parenchyma will be living. Fibers dead. What is the composition? Sclerenchymatous. Happy? Now let's talk about tracheids. Again, not mugging up anything. Plant knows that from the root under the ground till the stem, I have to make a continuous column. अगर उस पाइपलाइन में ब्रेक आया तो पानी तो नहीं जाएगा। जाएगा क्या भाई? आप एक पाइप, आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, शेक्स पीते हो, अगर उसमें हवा भर जाए या उसको मैं काट दूं रास्ते से या कुछ वहां पे बीच में अड़ जाए तो क्या बहेगा? क्या सामान नहीं बहेगा। So continuous column is ascertained by the arrangement of these elements. Let's see very carefully. In order to make an elongated continuous column, tracheids are very elongated thin cells. Okay? So tracheids are, this is a single cell with narrow lumen and tapering ends. टेपरिंग एंड्स इसलिए ताकि इनका अरेंजमेंट इजी हो जाए। ओके, सो यूनिसेलुलर एलोंगेटेड वेरी थिन ट्यूब, इट्स नॉट अ प्रॉपर ट्यूब, इट्स नॉट अ सिलेंड्रिकल ट्यूब विद टेपरिंग एंड्स। दीज आर ट्रेकीड्स। ट्रेकीड्स आर प्रेजेंट। विच वर द फर्स्ट ट्रेकरी प्लांट्स? टेरिडोफाइट्स। प्लांट किंगडम अभी 1 महीना पहले हुआ है। प्लांट किंगडम पिछले जन्म की बात नहीं है। क्या मैम आप भी कैसी बातें करते हो? 1 महीना पहले जो चैप्टर हुआ है हमें बड़ा याद है। आपको क्या लगा हमारे पास इतने काम होते हैं? इंस्टा का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, 1 महीना पहले की बात करते हो। इतने सारे मैसेजेस याद रखने पड़ते हैं पूरा दिन। उसने ये कहा, ये कहा। सो ट्रेकीड्स आर यूनिवर्सल। यार सवाल मैं ये निकाल रही थी, बीच में मेरा दर्द बाहर आ गया। ट्रेकीड्स विल बी प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। सी ट्रेकीड्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। बोले तो ये मेजर काम कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ सैप, लेकिन ट्रेकीड्स आर यूनिवर्सल इन टर्म्स ऑफ ट्रेकरी प्लांट्स। बोले तो टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। आया वैष्णवी, क्या हाल है मौसम का? काहे रोवत हो? ओके। उसके बाद अगर कोई पूछे कि ट्रेकीड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा स्क्लीरेनकाइमेटस सेल का स्ट्रक्चर होता है वैसा ट्रेकीड का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि वॉल्स विल हैव लिग्निन। वॉल्स विल हैव लिग्निन। Will they have protoplasm? What is protoplasm?
the living component of the cell? No, Baba, no. One of the main water transporting elements of xylem found in all tracheophytes. Somebody has written that. Now let's talk about vessels. Ooh, vessels. Listen to me carefully. अगर आपका मन हो, बाकी देखो chat box पूरी attention मांगता है. It is very important. It is going to make our future. पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेटिंग टेबल पर तड़प रहा होगा, हार्ट अटैक आया होगा, तुम मतलब तो भी आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें जो भी आपका मन करे, व्हाटएवर. उसको बोल, देख तेरा तुझे अभी मरना नहीं है, यमराज यू स्टॉप देयर, तो अभी तू नहीं लेके जा रहा है जान. आई हैव टू राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स. करो तुम लोग. नाउ पीपल, vessels are the, listen to my line, vessels are the major conducting elements of angiosperms. Ooh, that means vessels are absent in pteridophytes and gymnosperms. So they are the new age trachary elements. With me? Now, angiosperms realized that, you know what, tracheids have too narrow a lumen. So they made something which is actually like a cylindrical pipeline with better continuity. To देखो एक बात समझो, पाइप से लगातार पानी जाए उसके लिए मुझे प्रेशर मांगता है, पानी का प्रेशर मांगता है जो उसको प्रोपेल करेगा थ्रू द पाइप. The pressure that you apply when you suck the what chocolate shake juhi from the straw. I don't use straws, especially if they're plastic. I mean, it's not hygienic. Yeah. So vessels are composed of something called as vessel elements here. Okay, vessel members or vessel elements. So this is one cell. Have a look at the screen. One cell arranged, and there will be a third cell. Now people, they will have lignified walls. There is nothing inside. But look at the size of the lumen. So wider lumen. And they are multicellular. Tracheid was एक ही cell है, फिर उसके साथ दूसरा cell है, फिर उसके साथ तीसरा cell है. These are stacked upon one another. And the pressure thing that I was saying, well, between the two cells, we have gaps called as, we have pits or gaps between the vessel members so that pani can flow with a pressure. अगर ये pits नहीं, अगर ये इस तरह के gaps नहीं होते ना, तो फिर वो pressure नहीं create होता. Is that clear? So they are present only in angiosperms. Only in angiosperms. Aman, thank you so much for your love and appreciation. I'll be glad to have your juniors and seniors in my classes. Basically, spread the knowledge, spread the message of quality education. क्या हुआ? Chat box थोड़ा शांत हो गया है? अरे नहीं, you can't disappoint me. Guys, I have ways to trouble you guys. Don't think only you can trouble me. है ना? तो मैम को भी तो मोहलत होनी चाहिए ना तुम्हारा मजाक उड़ाने को. Okay. Did you see that? A large central cavity. Now textbooks write these things, a large central cavity. But you're my student. Huh? A little glamorous. A wide lumen. There we go. Okay. I want you to discuss anatomy with your friends who are not a part of this class. You will understand that there's a difference. अच्छा, ये question कैसे आता है? How will this question come? जैसे यहाँ पे ये points दिए हुए हैं, which you all understand. It will come as, अगर हम NEET 2022 का pattern देखें, which of the following statements is true and false, correct and incorrect, about the vessels found in xylem? They have lignified walls. Ooh, true. They have a large central cavity. इसको मैं क्या करूँगी? मैं examiner हूँ. मैं क्या हूँ? Examiner हूँ.
a narrow central cavity, narrow lumen. अब उस टाइम पे जनता को ये पता होना जरूरी है, अरे नहीं यार वेसल का तो फायदा ही यही है. क्यों एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट्स हैं? अरे भैया मेरी बात सुनो, एंजियोस्पर्म्स अगेन अ मिसनोमर इन द कंट्री इंडिया. एंजियो का मतलब होता है वेसल्स, स्पर्म का मतलब होता है सीड. यस, देयर इज नो रिलेशन हियर, बट एंजियोस्पर्म्स का नाम एंजियोस्पर्म्स इज फ्रॉम द टर्म एंजियोस एज एन एंजियोप्लास्टी. एंजियो का मतलब होता है वेसल. आया? आया. डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑफ कोर्स इट्स अ डेड सेल, फॉर क्राइंग आउट लाउड, है ना? एंड द परफोरेशंस इन द कॉमन वॉल्स. अब इसको रटना ना पड़े इसलिए मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया. टू क्रिएट अ प्रेशर, टू कीप द वाटर फ्लोइंग, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी. There is a reason to every concept given in the textbook. Why you are on Aakash BYJU'S NEET and not anywhere else, people who were trying to spam my chat box, is because I'm quite confident of this fact, because I put my soul into teaching. Ki merely completing the syllabus and telling you the lines in a verbal manner as they are given in the textbook is what is happening everywhere. But that is not going to make you a sure ranker in NEET. What is going to make it sure that you are a ranker, NEET ranker, and not just an aspirant with everybody? So many people are walking in the park here. Is when you know the why of things. Because there exists a why, might as well know it. As a child, you were so curious. Ask your mama, Mama, why is this? Why are stars like this? Why there is day? Why there is night? Now that was real you. In the course of life, you have forgotten to ask the why of things. So what I'm trying here, and why you are associated here, and some of you have connected so well, is because I tell you the why of things, so that you retain the concepts for the D-Day. Okay? So now this is the why there are perforations in the common walls. Continuity of the water flow, water column. Aya? Koi doubt? Koi shanka? What is the time? What? Okay. People, I'll see you in the next class. Tracheids और vessels की differences करके उसके बाद हम parenchyma से next class में start करेंगे. Tracheids are present in all vascular plants. Vessels are present only in angiosperms. Tracheids have a narrow lumen. Vessels have a wider lumen. Tracheids are highly thickened. Vessels, since they have wider lumen, are less thickened. Tracheids में एक single celly elongated with tapering ends है. Vessels में vessel members with perforations, better continuity is maintained. Hence, they are more efficient. They are more efficient. चमका, अगली क्लास में xylem parenchyma करेंगे. Take care till then. And I'll see you when I'll see you. Keep smiling, take care of your health, and happy Dussehra to all of you. Bye-bye.